हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन. चलो, so let's enjoy our last class and then you guys should enjoy your exam. Just a second. Okay, so in the today's class we are going to take some problems on differential equations, and in fact in today's class I am going to take problems on differential equations from CSR NET exam, because बहुत टाइम देखा गया है CSR NET exam से डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आप लोगों के जैम में आती है. The question those were appeared in CSR NET exam previous years आपके जैम में डायरेक्टली अपीयर हो जाते हैं. ठीक है. Okay, so no doubt CSR NET exam questions are much important, so we are discussing them in today's class. Pratiksha Singh, I sent you some doubts. I did not get the solutions yet. Okay. Yes, Pratiksha, remember beta, you have sent me some problems from your Eduncle USPs, है ना? Correct ना beta? Yes, but the thing is, Pratiksha, those problems are like हम उनको quickly direct at a glance नहीं solve कर सकते. And the thing is, those are also not important in the exam point of view. ठीक है, तो you may leave. ठीक है, like वो ऐसा problem था ना, estimated like approx answers like ऐसा कुछ था ना प्रतीक्षा. You can skip beta. Taylor series में ऐसे questions नहीं पूछा जाएगा. Don't worry. Approximations is not in our syllabus. ठीक है. So chill. ठीक है. चलिए, okay. अच्छा, okay. So before we start the differential equation, let's take some questions based on maxima minima, especially doubtful cases, है ना? So वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद we'll take important problems from differential equations. चलिए, okay. So the maxima minimas in two variable, you know, suppose it if a comma b is a critical point, no doubt a comma b should belonging to domain. ठीक है. f should be a function of two variable from s to say r, where s going to be a subset of r2 space. Correct na? So it's a two variable function. So if you have a point from the domain and that is what your critical point. ठीक है. So at this critical point you will have a doubtful case. बशर्ते if you compute r is nothing but del 2f by del x square. सही बात है. t is nothing but del 2f by del y square, and s is nothing but del 2f by del x del y. Correct na? Compute all these second order partial derivatives at these critical points and then find rt minus s square. So if your rt minus s square is what? Equal to 0. If your rt minus s square is equal to 0 at some critical point, a comma b, then it is a doubtful case. है ना? Then it is a doubtful case. Doubtful case. So we need to check further. We need to do some investigation further. So in that case, we need to take, what we'll take my function minus value of function at the point a comma b at the critical point. ठीक है. And then we will check the sign of this expression. We will check the sign of this expression, whether this expression is greater than 0, less than 0 or both. ठीक है. Means positive रहे, negative रहे, या फिर positive negative both हो. किसमें? In a neighborhood of the point a comma b. Means take the nearby points of the point a comma b. You can take circular neighborhood or you can take square neighborhood of this point a comma b. ठीक है. और उस neighborhood में जो भी points हैं, ठीक है, you have to check whether this expression having a same sign or having different sign, like for some points it is positive, for some points it is negative and all. ठीक है. ये हमें चेक करना होता है. If you are getting this is positive for all the points in the neighborhood of a comma b, then the a comma b going to be point of minima. If you are having it is less than 0 for all the points in the neighborhood of a comma b, then you will have a comma b is a point of maxima. Or if you have at some points in the neighborhood of a comma b this expression having sign positive or having sign negative, then the point a comma b is neither maxima nor minima. In that case your point going to be known as a saddle point. Correct है. So always remember beta, such cases either your expression is positive or negative, such cases going to be appear whenever आपके पास ये जो expression है, यहाँ पर आप you can make some
परफेक्ट स्क्वायरिंग और यू कैन डू दैट फैक्टराइजेशन एंड ऑल, ठीक है, वो क्वाइट पॉसिबिलिटी वहां पर रहती है, देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई, अदरवाइज यू हैव टू थिंक और you just need to pick 2 points. You just need to pick 2 points nearby this point a comma b, such that at one point this expression is positive and another point this expression is negative. Correct है? So ज़्यादा difficult नहीं है, हो जाएगा. So let's say few more problems on it so that आप लोगों को और भी better समझ में आए. Okay, so we can take this problem. Okay, so now I am having a 2 variable function x square minus 2xy plus y square plus x cube minus y cube plus x raised to 5. ठीक है, I am having this. So let's find here point of maximum, minima and so on. चलिए, so del f by del x will give us what? It is x square. Yes, it is twice x minus of twice y. This 0 and I'm having here 3x square. This will be 0 and from here I'll have 5x raised to 4. Correct? Okay, if I'm taking del f of del y, then it is 0 and from here I'll have minus of twice x, ठीक है, plus of twice y and minus of 3y square, ठीक है, and 0. So for the critical point, I'll take it 0 and I'll take it equal to 0. ठीक है जी, okay. So now look at this equation. So I'm having here. So look, just a second. Okay. So can I do this? But it will not help me a lot. We need to find the critical points, correct? Chale, okay. So the first equation is 5 times x raised to 4 plus horizon पे हमें चेक करना है basically, ठीक है, okay. 3x square plus twice x minus of twice y is equal to 0. And this equation, if I am taking negative outside, then it will be 3y square minus of twice y and plus of twice x is equal to 0. Okay. Subtraction will not help me a lot. It is clear that one of the critical point is 0, 0. Correct ना? ये तो clear है. Actually, whatever question is I have, so वहाँ पर हमें 0, 0 को identify करना है. We have to identify the 0, 0 point. Where 0, 0 that is origin is a point of maxima, point of minima, और या फिर saddle point. But we can find out here critical point. Clearly, one critical point is 0, 0. Correct? Okay. Now to find rest of the critical point, how we will do it? If I subtract them, but this problem, if I'm taking subtraction will not help me. सेम थिंग बेटा, यहाँ पर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे. चलो ठीक है, लेट्स डू दिस. Let's do it. First of all, let's take our doubtful case. ठीक है? Okay. So clearly 0, 0 satisfied this equation and this equation simultaneously, not correct ना? If you put here x0, y0, it will be satisfied. If you put here x0, y0, it will be satisfied. Yes. So 0, 0 going to be one of the critical point. So we will identify its nature first, है ना? इसका nature first of all find करते हैं. चलो okay. The other critical points we will find later. चलिए okay. Let's take the second order partial derivative, del 2f by del x square. So del 2f by del x square will give me what? That 2, 0 plus 6x and plus 20x raised to 3. Correct? And del 2f by del y square. This will give me with respect to y, so twice minus of 6y. Okay? And now del 2f by del x del y. Differentiate del of del y with respect to x, so this giving me y minus 2. Chalo, okay. Now compute
here values at 0, 0. So my r at 0, 0 will be 2. T 0, 0 is 2. S at 0, 0 is minus 2. So if I am computing here RT minus S square, RT minus S square, so 4 minus 4, this giving me 0. So this will implies at 0, 0, we have a doubtful case. Okay. So we need to take, so we'll take here what? We'll take here f at x comma y minus f at 0, 0. So my function is x square minus 2xy minus 2xy plus y square. Okay. Okay, and x cube minus y cube plus x cube minus y cube plus x raised to 5. Correct? Okay, chaliye. So we have this, and 0, 0 पर value function is 0. So overall I am getting this expression. Okay. So we need to check whether in a neighborhood of 0, 0, in a neighborhood of 0, 0, just look the surrounding points nearby 0, 0. This expression having a same sign or having different sign है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है ना. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक सम फैक्टर्स. ऑलवेज ट्राई क्या करो कि आप कुछ फैक्टर्स बना सको, है ना, बिकॉज इफ यू मेक सम फैक्टर्स तो वहां से हमें कुछ कर्व मिल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल by looking these three equations, three terms, it is simply give us x minus y to the whole square. Correct? Huh? And if you are observing these two terms, then here you will have x minus y, correct? And x square plus xy plus y square. Sahi na? And keep it aside, x raised to 5. Okay. Now from these two terms, you can take x minus y outside. So if I am taking x minus y outside, then I'll have x minus y plus x square plus xy plus of y square. Okay, plus x raised to 5. Okay. Now look, bacha. One term and another term. In the first term, I have product of two terms. So look, you can take all the points where x and y are same. If you are taking, I can take a curve na, y is equal to x, y equal to x, it is a curve passing through the origin, hai na? Y equal to x, it is a curve passing through the origin. Look, here are mera, y is equal to x. So all the points, these points will be nearby 0. Correct? Getting my point? Okay. So look, if you are taking y equal to 0, so this expression will be vanished. Yes, now this expression will be vanished. You just have here x raised to 5. Look here, you just have x raised to 5. So beta यहाँ पर देखो, we are having here odd power. So look, yes, my work is done. By taking this one curve, my work is done. So look, x raised to 5 I have. So y equal to x. Y and x both are same here. So whenever you will take here y and x both are same here, मतलब your x is positive. Your x is positive, so your positive रहेगा. But when you take y and x both are same here, then here your x will be negative. है ना? इस side में x will be negative, so x raised to 5 will be what? Negative? Yes or no? Yes or no? For example, just take 0.1, 0.1 or take minus 0.1, minus 0.1. काम खत्म. Yes, at this point you will have positive, at this point you will have negative. Agree? 0.1 is nearby 0, na? 0.1 lies in the neighborhood of 0. Minus 0.1 also lies in the neighborhood of 0. Clear? Hai? So here this expression do not keep the same sign in the neighborhood of 0, 0. So this will implies that 0, 0 is a saddle point. Clear है? Clear हुआ doubtful case? So always try to make some factors, because जब आप factorization लोगे, like one factor is this, so from this factor y equating this factor to 0, एक curve मिल गया ना, y equal to x, so I can obtain some curves. So वहां से help मिल जाएगी हमें. Kartik Singh, repeat once. खुशबू सिंह, we should add. अच्छा ओके, वो तो प्रीवियस. कार्तिक, यहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है बेटा?
look here, the neighborhood of 0, I can take all the points, those are lies in this line, those are lie on this line, y equal to x, y equal to x is the line, ये वाली line है ना, करेक्ट है बेटा। तो अगर इफ आई एम टेकिंग द पॉइंट्स, अगर मैं पॉइंट्स ले रही हूँ, इफ आई एम टेकिंग पॉइंट्स वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर सेम, आई एम टेकिंग ए कोमा ए टाइप पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम, तो बेटा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ये टर्म जीरो जाएगा, ये वाला फैक्टर जीरो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो जाएगा, and I just have only x raised to 5, ठीक है। तो x and y, if I am taking x and y both are same, so I can take 0.1 0.1 or I can take minus 0.1 minus 0.1. So at this point, कार्तिक देखो बेटा इस पॉइंट पर क्या मिल रहा है, this term is positive and at this point this term is negative, करेक्ट ना। So in a neighborhood of 0 I am observing कि ये जो एक्सप्रेशन है उसका साइन सेम नहीं है। 2 points are sufficient. If you are find out at least 2 points in the neighborhood of your point a comma b, कि एक point पर your expression, this expression having value positive and another point पर this expression having value negative, then your work is done. You will say that your critical point is what? A saddle point. ठीक है, just that's all. So वही मैं बोल रही हूँ, always try to make some factors. So factors को देखने से ना आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ कर्व्स मिल जाएंगे, तो उन कर्व्स पे जो पॉइंट लाई कर रहे हो आप उनके थ्रू थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, ठीक है। So this is how we'll do such problems, and also we have done 3 or 4 problems, such problems in class notes also, so try to resolve them, उनको भी एक बार थोड़ा सा देख के जाना, इजी है, बहुत इजी है ये तो, ठीक है। चलो ओके, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स है, चलिए। So suppose x from 0 infinity to 0 infinity be a function, x is a function defining from 0 infinity to 0 infinity closed interval, and x at 0 equal to 0, this is given, and my function satisfying this inequality, for all t greater than equal to 0, that which of the following is true, ये हमें पूछा गया है, ठीक है, ये हमें पूछा गया है। अच्छा जी, ओके। सो लुक बेटा, इस टाइप भी इस बार भी 2021 में हम लोगों ने देखा था, इसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई थी, यस, इसी टाइप की प्रॉब्लम आई थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है। मतलब हियर यू कैन यूज डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस बोथ, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू हैव सच काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, where involving integral sign, so always try to solve them by using Leibniz rule, ध्यान रखना, ठीक है। So look, this is less than or equal to, here you have equal to sign also na, so if you have equal to sign then you can consider an equation, so if I am taking x of t to the whole square is equal to, or you can take it by taking inequality also, उससे भी काम चल जाएगा, 2 plus integral over 0 to t x is a function of s d of s. Now apply Leibniz rule and differentiate both sides, ठीक है, differentiate both sides, so हमें क्या मिल जाएगा, twice x of t into x dash t, this 0, and by the Leibniz rule, I need to apply here Leibniz rule ना, तो क्या रहेगा, the value of integrand at the upper limit into derivative of upper limit minus value of integrand at lower limit and derivative of lower limit. Lower limit is 0, so its derivative is 0. So ultimately I am getting twice of x of t into x dash t is equal to x of t. Okay, so this giving me that x of t into twice of x dash t minus 1 is equal to 0. So either this is 0, this is 0. So my x never going to be 0. X is not the identically 0 function. Huh? X is not the identically 0 function. Okay? So I will not take this. So from here I am getting that twice dx by dt minus 1 is equal to 0. The thing is dx by dt is equal to 1 by 2. So this giving me that x is a function of t, which is nothing but t by 2 plus constant c. Okay, so the condition is given, x at 0 is equal to 0. So x at 0 is equal to 0. So this will imply that c is equal to 0. So as my c is equal to 0, so x of t, it is nothing but t by 2. Okay, or you can say x of t is less than equal to t by 2. Correct है, clear है, चलिए ओके। सो लुक,
तो अब यहाँ पर देखिए, तो क्या पूछा गया, एक्स ऑफ रूट टू बिलोंगिंग टू व्हाट इंटरवल। सो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप इधर में देख लो, पुट x is equal to root 2. If I am putting here x is equal to root 2, then x of root 2 is equal to what, root 2 by 2, which is nothing but 1 by root 2. ठीक है, तो x at root 2 is nothing but 1 by root 2. 1 by root 2 मतलब 1.1.414 टाइप लाइक ऐसा कुछ। करेक्ट बात है ना, करेक्ट बात है। तो देखिए बेटा ये किस इंटरवल में लाइक कर रहा है, 1 by root 2 will not be in this interval, will not be in this interval. So C and D तो डिस्कार्ड हो चुके हैं, ठीक है, ओके। सो 1 by root 2 will lies in this interval, agree or not agree, as well as lies in this interval also, yes or no, yes. So always remember, if you have like such problem, ठीक है, और आपके पास दो, you are getting two intervals, you are getting two intervals, दोनों में ही आपकी क्वांटिटी लाई कर रही है, तो ऑलवेज गिव आंसर फॉर द लार्जर इंटरवल। आंसर हमेशा किसके लिए दोगे, लार्जर इंटरवल के लिए, मतलब आंसर ऑलवेज लार्जर इंटरवल को चूज करना। ओके, सो आंसर में क्विकली 0,2 कंटेन इन 0,3 by root 2 और 0,3 by root 2 कंटेन इन 0,2 सॉरी, दोनों में से कौन सा इंटरवल किस में कंटेन कर रहा है, क्विकली आंसर दो मुझे। ए कंटेनिंग इन बी और बी कंटेनिंग ए। I'm talking about only intervals, because it is clear that clearly that 1 by root 2, this will belonging to 0,2 as well as this point belonging to 0,3 by root 2, दोनों में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नाउ आंसर मी, इन दोनों इंटरवल में से कौन किस में कंटेन कर रहा है, इन दोनों इंटरवल में से कौन किस में कंटेन कर रहा है, बी कंटेनिंग इन ए। बेटा ए कंटेन इन बी, जिनेश लेबनीज रूल तो बेटा आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ा होगा ना, सर ने पढ़ाया ही होगा। चलो अभी रुको बताती हूँ। यस, सो द थिंग इज दिस 0,2 विल कंटेन इन दिस। सो लुक, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 1 by root 2 is containing in 0,2 and 0,2 will contain in 0,3 by root 2। करेक्ट है, सो ऑलवेज आंसर फॉर द लार्जर इंटरवल। इस चीज को ध्यान देना, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई करना कि वैसे तो जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट सपोज इट अगर आ भी जाता है तो ऑलवेज चूज द लार्ज इंटरवल। So you will say 1 by root 2, which is nothing but x at root 2. This will lie in the interval 0,3 by root 2, because this interval itself containing in this. So my answer B would be correct here. Best answer will be B. Clear to everyone? ठीक है, चलिए ओके। जिनेश लेबनीज रूल बहुत इजी सा था बेटा, तो मतलब उसमें तो कुछ भी नहीं था। लाइक सपोज यू हैव इंटीग्रल फाइंड द फंक्शन ऑफ x एंड हियर सपोज इट साइज द फंक्शन ऑफ x you have, and your integral say like you have this and you want to integrate, you want to differentiate it, you want to differentiate this. So this says the क्या करेंगे, the value of integrand at the upper limit, मतलब जो भी आपका इंटीग्रांड है उसमें अपर लिमिट को पुट कर दोगे, मतलब replace your t by phi is the function of x, ठीक है, and into derivative of upper limit which is phi dash x, and minus the value of integrand, the value of integrand at lower limit means replace your x by phi is the function of t into derivative of lower limit which is f dash x. बस इट इज योर Leibniz रूल, इट इज योर Leibniz रूल, ठीक है, बस यही है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बाय मिस्टेक आ चुकी है यहाँ पर। इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नॉट इन आवर सिलेबस, सो इट इज बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। So focus on this problem. So consider the solution of this ordinary differential equation with subject to the condition that y at 0 is equal to y naught. ठीक है, y at 0 equal to y naught, where y naught can be any number between open interval 0 to 2. ठीक है, चलिए ओके, ये आ रहा है प्रॉब्लम। तो अभी हमें देखना है लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी y ऑफ t, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी y ऑफ t बिलोंगिंग टू
व्हाट सेट्स है ना, ये किस में बिलोंग करती है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ना, करेक्ट। चलिए ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन क्विकली। सो इट इज dy by dt is equal to माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस वाई, ठीक है। ओके, आई कैन टेक वाई आउटसाइड, सो दिस विल गिव मी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, और आई कैन टेक माइनस ऑफ वाई आउटसाइड, ठीक है। लेट्स डू फैक्टराइजेशन हियर। माइनस ऑफ वाई आउटसाइड किया तो ये वाई स्क्वायर माइनस का वाई एंड माइनस ऑफ ट्वाइस, सो माइनस का वाई, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई प्लस वाई माइनस का 2, सो माइनस का वाई, वाई माइनस 2 और y plus 1, करेक्ट है जी, ठीक है। ओके, सो द थिंग इज आई कैन सॉल्व इट बाय द पार्शियल फ्रैक्शंस, सो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सिंपली थिंग समझ में आ ही रहा है। सो y टाइम y minus 2 y plus 1 and here because of this negative minus of dt, करेक्ट है। क्लियरली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करेंगे, है ना। आई नीड टू यूज हियर पार्शियल फ्रैक्शन, so 1 upon y plus 1 upon y minus 2 plus 1 upon y plus 1, करेक्ट है भाई। ओके, dy इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा माइनस का t प्लस कॉन्स्टेंट c। सो लुक, वी नीड टू फाइंड सम कॉन्स्टेंट आल्सो, है ना। ओके, सो इफ आई वांट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by y, है ना, 1 by y, सो क्या करना होगा, आई हैव टू रिमूव दिस y फ्रॉम हियर, है ना। I have to remove y from here and put here y equal to 0. So when I put y equal to 0, so there you will have minus ka 1 upon 2. Correct now? Okay. Now I need to find the coefficient of 1 upon y minus 2. So I have to remove this factor y minus 2 from here and overall जो है उसमें y equal to 2 put करना होगा. So 1 upon 2 और 3. So you will have here 6. Okay. इसके लिए करना है तो you have to remove this factor और यहाँ पर क्या put करना होगा, y equal to minus 1, so 1 by 3 positive. क्लियर ना, ठीक है। चलिए जी, ओके, सो फटाफट से इंटीग्रेट कर देते हैं। सो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 1 by 2 ln y प्लस ऑफ 1 by 6 ln y minus 2 प्लस ऑफ 1 by 3 ln y plus 1, दिस इज यही मिलेगा 1 by 3 ln y plus 1, 1 by 6 ln y minus 2, so minus 1 by 2 ln y, okay, and minus of t plus constant c, correct है। चलिए ओके, so we can do one thing, I can do one thing, instead of this c I can take ln c। so look बच्चा क्या मिल रहा है यहाँ से, फटाफट से चलो फटाफट से देखो, I am getting ln of y minus 2 to the power 1 by 6, एलसीएम लो या फिर इस तरीके से भी कर लो आप, तो ठीक है, बेटर है। आई एम डूइंग बाय दिस मैनर, y plus 1 to the power this and divide में y to the power 1 by 2 और ये यहाँ पर c आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का t, टेक एक्सपोनेंशियल बोथ द साइड, सो y minus 2 to the power 1 by 6 into y plus 1 to the power 1 by 3 upon y to the power 1 by 2 equal to c time e raised to minus का t, करेक्ट है। I will have this solution, correct ना भाई। चलिए ओके, the given thing is y at 0 is equal to y naught, okay, I need to put t equal to 0, so c is equal to what, c is equal to क्या मिल जाएगा यहाँ से देखो, y naught minus का 2, y naught plus 1, here you have power 1 by 6, here you have power 1 by 3 and divided by y naught to the power 1 by 2, c you have, so over and all my solution will be what, my solution is y minus 2 to the power 1 by 6 y plus 1 to the power 1 by 3 upon y to the power 1 by 2 is equal to the value of c is this, ये आ रही है ना c की वैल्यू, the value of c is this, है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, सिंपली y naught minus 2 to the power 1 by 6 y naught plus 1 to the power 1 by 3 upon y naught to the power 1 by 2 and here e raised to minus का t। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए ओके, अब फटाफट से देखिए, वी नीड टू सेंड माई t टू इन्फिनिटी। अब जब यहाँ पर आपने लिया एज t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो t को सी दिस नंबर इज अ कांस्टेंट ना,
This number is a constant. It's going to be fixed constant, as my y0 can be any number from open interval 0 to 2. So it is a fixed constant. So when you sending your t to infinity, this term will tends to what? 0. So right hand side tending to 0. So that means left hand side should tends to 0. So it is only possible. It is only possible when y tending to 2 or y tending to minus का 1. Yes or no? सही बात है. सही बात है. So the thing is, my limit t tending to infinity, y of t, this can be minus का 1 और this can be 2. Yes or no? आया समझ में? क्लियर है? ठीक है. ओके, तो चलो ऑप्शंस पे चलते हैं. सो ऑप्शंस में देखो, यस, दिस विल बिलोंगिंग टू माइनस का 1 एंड 2, मतलब माइनस 1 और 2, ये पॉसिबिलिटी है. ओनली दिस पॉसिबिलिटी आई हैव. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द 0, सो y एट 0 इज इक्वल टू 0. तो ये सॉल्यूशन तो हमारा, ये लिमिट तो हमारी हो ही नहीं सकती. ये वाली लिमिट तो हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिमिट की वैल्यू हमारी 0 तब होगी जब y मेरा किस पे जाएगा? इन्फिनिटी पे जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. आया समझ में? या किसी को डाउट है? सी, डिफरेंशियल इक्वेशन के रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनका काफी हेल्प मिलेगी इनसे आपको. हाँ, तो समझ में आया ये क्वेश्चन या किसी को डाउट है? चलिए, तो फिर आगे बढ़े. क्लियर है तो चलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. एक्चुअली यहाँ पर इट इज नॉट ए, इट इज योर लैम्डा. बेसिकली द सेट ऑफ रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिस हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है जी, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें चाहिए, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन विल होल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस लैम्डा of y is equal to 0. Correct. I have no information about the lambda, so the auxiliary equation क्या जाएगी? m square plus lambda is equal to 0. So the thing is, see, you can take some cases also. So see, यहाँ से क्या जाएगा? m square is equal to minus का lambda. m square equal to minus का lambda. ठीक है. So your lambda can be positive or lambda can be negative and so on. ठीक है जी. So without loss of generality, you can take, whenever you have such kind of problem, so you can take, if fixed case, you can take, say, lambda is greater than 0. I am taking this case, lambda is greater than 0. So no doubt, as lambda is greater than 0, so this number is negative. So m equal to what? Plus minus iota square root of lambda. करेक्ट बात है? करेक्ट बात है ना? तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन y of x क्या जाएगा? c1 cos of square root of lambda x plus c2 sin of square root of lambda x. करेक्ट है, एज आई एम टेकिंग दिस केस. चलिए, सो कंडीशन गिवन है y at 0 is equal to 0. so y at 0 is equal to 0. so if I am putting x is equal to 0, so ये vanish और यहाँ से c1 is equal to 0. c1 0, that means my solution is now c2 sin of square root of lambda x. Okay, next condition is y at pi is equal to 0. See, if you are putting here pi, okay, so I am getting c2 sin of square root of lambda pi is equal to 0. So this implies either c2 is 0, this is 0. But see, c2 cannot be 0. है ना? Because if I am taking c2 0, तो c1 c2 both are 0, so I will have trivial solution, that is 0 solution. And यहाँ पर given है, we want non-trivial solutions. We want non-trivial solutions. So at my c2 never be 0. c2 never be 0, that means sin of square root of lambda pi equal to 0. So it is only possible when square root of lambda pi is equal to n pi's. Correct na? अब see, this left hand side is what? Positive na? Left hand side is positive, so this right hand side must be positive. That means your n should be natural number. You cannot take that n is what? Integer. है ना? Because balancing रहेगा ना? Completely you can easily look here that your left hand side is positive, so right hand side should be positive. That's why n should be an integer, or like positive integer. You can say here, and can be yes, natural number including 0, whole numbers type. ठीक है. चलिए, so pi to pi cancel out. Square root of lambda equal to n square, that is lambda equal square root of lambda is equal to n, that is lambda is equal to n square when n is
or you can say positive integer. Clear? So just go back to our options. So no, no, yes, and is a positive integer. So my C option is correct here. Clear है? Clear to everyone? ठीक है. If you are taking here cases, other cases like if you are taking lambda equal to 0, lambda को 0 कर लिया तो m equal to 0 and 0. Correct ना? One case is lambda greater than 0, lambda 0, lambda less than 0. Correct ना? If you are taking lambda equal to 0 तो m equal to 0 0 ये मिल जाएगा. तो यहाँ पर solution क्या जाएगा हमारा c1 plus c2x. Only this we will have. ठीक है. So the conditions है y at 0 is equal to 0 and y at pi is equal to 0. तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा c1 0 मिल जाएगा और यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं रहेगा. क्या मिलेगा c2 pi is equal to 0. Clearly pi not equal to 0 तो c2 must be 0. That means I am getting trivial solution. While taking lambda equal to 0 I am getting trivial solution. So beta look here you cannot take an as a 0 है ना, because lambda equal to 0 पर तो क्या मिल जा रहा है I am getting the trivial solution. So lambda equal to 0 हमारे केस में नहीं आएगा. क्लियर है? क्लियर है. और सिमिलरली अगर आपने थर्ड केस लिया, इफ यू आर टेकिंग लैम्डा लेस देन 0 तभी भी आपको कुछ, बिकॉज लैम्डा लेस देन 0 तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा, दिस नंबर गोइंग टू बी व्हाट पॉजिटिव. लैम्डा लेस देन 0 सो यू कैन टेक लैम्डा इक्वल टू से माइनस का बीटा वेयर बीटा इज पॉजिटिव. सही बात है ना. तो यहाँ पर क्या जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा वेयर बीटा इज पॉजिटिव. तो m इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा. सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट से तो जब आप सॉल्यूशन आपको क्या जाएगा यहाँ से आ जाएगा c1 e रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ बीटा x प्लस c2 e रेज टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बीटा x. So when you will use the condition y at 0 is equal to 0 and y at pi is equal to 0, then clearly you will get c1 and c2 both are identically 0. मतलब in this case also you will have what trivial solution. So for the non-trivial solution there is only one possibility that lambda should be strictly greater than 0. So lambda should be n square type for n natural number. Clear to everyone? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, y1 y2 की सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम. ठीक है, y at 0 equal to 0 given है, where a b are the real constant, means we are having a homogeneous linear differential equation with constant coefficient. ठीक है, with the condition y at 0 equal to 0. okay, and let w be the Wronskian of y1 and y2. y1 y2 की Wronskian है, तो यहाँ पर Wronskians के बारे में पूछा गया है. Wronskians के बारे में क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. देखो बेटा, तो y1 y2 टू सॉल्यूशंस है. अभी हमें नहीं पता है कि y1 y2 यहाँ पर li सॉल्यूशन है या ld सॉल्यूशन है. वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. ठीक है, बट दो सॉल्यूशन है तो भाई पॉसिबिलिटी है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो c1 y1 इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस c2 y2 इज अ फंक्शन ऑफ x. ये हम दे सकते हैं. ठीक है, ये वाला हम इसका एक सॉल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, y at 0 इक्वल टू 0 है ना, y को 0 यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये 0 आ जा रहा है. मतलब c1 y1 at 0, c2 y2 at 0. ठीक है, अब बेटा c1 एंड c2 तो ये हमारे 0 हो नहीं सकते क्योंकि ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना. तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये इंप्लाई करेगा कि y1 at 0 और y2 at 0 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Are you getting my point? I am having here homogeneous linear differential equation with constant coefficient, जिसके दो solutions हमें पता है. We don't know whether these solutions are Li or Ld. But the thing is, one solution of this equation can be given by this. The given thing is y at 0 equal to 0. ठीक है. So if you are putting here x equal to 0, you are getting this. C1, C2 never going to be 0 because they are arbitrary constants. So this must imply that y1 at 0 and y2 at 0 must be 0. ठीक है. ओके, सो नाउ इफ यू आर फाइंडिंग Wronskian ऑफ y1 एंड y2 तो क्या होती है Wronskian ऑफ y1 y2? y1 y2 y1 dash and y2 dash. okay, now find the value of this Wronskian at 0. that is y1 at 0, y2 at 0, y1 dash at 0, y2 dash at 0. now y1 at 0, y2 0 is 0, so this complete determinant is 0.
करेक्ट. सो आई एम गेटिंग Wronskian at 0 is equal to 0. Wronskian 0 पर क्या हो रहा है हमारा 0 हो रहा है. So there is a point at which the Wronskian of y1 and y2 becomes 0. हाँ जी. So can we conclude something? क्या हम लोग कुछ conclusion निकाल सकते हैं? We have a result now that Wronskian is either identically 0, never be 0. So if we are finding at least one point where Wronskian is 0, if we are finding at least one point where Wronskian is 0, that means Wronskian going to be identically 0. Wronskian जो रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? Identically 0. Yes, correct है. So yes, Wronskian is 0 for all t belonging to R. This is going to be my correct answer. Always remember, मैं लिखवा भी चुकी हूँ. Wronskian is either identically 0 or never be 0. यही कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है whenever we have questions like that related to Wronskian. Clear है? So here my Wronskian is identically 0 because of this condition. Because of this condition. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, next problem is this. Y from R to I be a solution of this ordinary differential equation. Okay, then limit equal to 0. Then what we can conclude? तो यहाँ पर this going to be my MSQ question. ये जो है वो मेरा MSQ question है. Okay, so 2y double dash plus 3y dash plus y is equal to e raised to minus of 3x we have. So we can write it as 2d square plus of 3d plus 1 y is equal to e raised to minus of 3x. ठीक है. So the auxiliary equation will be 2m square plus 3m plus 1 is equal to 0. So the thing is 2m square plus twice m plus m plus 1 is equal to 0. So the thing is 2m plus 1 or m plus 1 is equal to 0. So we are having that m is equal to minus 1 or minus का 1 by 2. Two real and distinct roots. So the complementary function will be c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus of x by 2. ठीक है जी. Let's compare the particular integral. Particular integral क्या जाएगा 1 upon 2d plus 1 d plus 1 and you have here e raised to minus of 3x. ठीक है. Non-variation is, so put d equal to minus 3 both the sides. So we are putting here minus 3, so I'll have minus का 2 and यहाँ से minus का 3 put किया तो minus का 5 e raised to minus 3x, that is 1 upon 10 e raised to minus of 3x. So the thing is my solution y of x is equal to c1 e raised to minus का x plus c2 e raised to minus of x by 2 plus e raised to minus 3x by 10. ठीक है जी. चलिए. Okay, we have this and the given thing is only one, which is this. That means multiply your solution by e raised to x and take limit x tending to infinity. Now given है हमारे पास limit t tending to infinity e raised to x y of x is equal to 0. So limit t tending to infinity. So multiply this with e raised to x. So you will have c1 plus c2 e raised to minus of, you will have plus of x by 2. ठीक है. Plus e raised to minus of twice x by 10 and the given thing is this value is equal to 0. Correct ना? This we have. So look बच्चा, when you sending your t to infinity, this term will become 0. This is already constant. So but this will tends to plus infinity है ना. x है हमारे को. wait एक सेकेंड बच्चा. I have written here x ना. एक सेकेंड आप लोगों को कंफ्यूज नहीं, x ही है. सॉरी, ये t गलत मैंने पुट कर दिया. Limit I need to take s because x is the variable not t. X is the variable not t. So x should tends to infinity, no doubt. अच्छा ओके. So look, ये ऑलरेडी 0 जा रहा है, यहाँ से 0 है, ये कॉन्स्टेंट है g1, बट बिकॉज ऑफ दिस टर्म हमें इन्फिनिटी मिल रहा है. सो दिस मस्ट इम्प्लाइज कि c2 को क्या होना पड़ेगा 0. c2 ऑलरेडी 0 हो जाएगा, यहाँ से c1 0 आ गया. करेक्ट है. सो अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जा रहा है हमारा e raised to minus 3x अपॉन का
10. Clear to everyone? Clear हुआ? So just because of this one limit, just because of this one condition, एक ही condition से हमें C1 C2 दोनों की values यहाँ पर मिल पा रही है. Nice ना? Such kind of conditions can also be there. चलिए जी अब ऑप्शंस को देख लेते हैं. तो ऑप्शंस में आ रहा है e raised to 2x y is equal to 0. No, e raised to 2x y not is equal to 0. अच्छा एक सेकंड. A option is correct. Y at 0 is 1 by 10. Yes. If I am putting x is equal to 0, it is 1 by 10. So yes, my B option is correct. Y is a bounded function on R. No, y is not the bounded function now, because e raised to minus x minus 3 is going to be unbounded because it is unbounded. So y not bounded. And y at 1 is equal. अच्छा ये तो हमारा MCQ ही रहा, MSQ नहीं आया. Y at 1 is equal to 0. No, y at 1 not is equal to 0. Yes, so basically एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ, MSQ नहीं हुआ, ये तो हमारा MCQ ही रहा, है ना? चलिए ओके. सो बट ओवरऑल इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस क्वेश्चन इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द ब्रोंस्कियन. ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, वी हैव डन अर्लियर जस्ट प्रीवियस ईयर. कोई आंसर देगा इसका? फटाफट से रीड करो. पी एन क्यू कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1. ui क्लोज इंटरवल -1 to 1 to r, मतलब u1 and u2 both are defined on close interval -1 to 1 to r. ठीक है? And u1 u2 है ना? Here u1 and u2 are the solution of ordinary differential equation. This okay, satisfying u1 is greater than equal to 0, u2 is less than equal to 0. But the major thing is this. The value of u1 and u2 at 0 is 0. The value of u1 u2 are two solution of this equation. Okay, so if you find out the Bronskin of u1 and u2, the Bronskin will be what? u1x, u2x, u1 dash x, u2 dash x. Correct? So if you are finding Bronskin at 0, so क्या मिल जाएगा? u1 0, u2 0, u1 dash at 0, u2 dash at 0. u1 and u2 at 0 is 0, so Bronskin is 0. So at one point my Bronskin is 0. So this will implies that Bronskin going to be identically 0 for all x belonging to my domain, as my domain is -1 to 1. So whenever Bronskin is 0, so ये imply करेगा solution y u1 and u2 are linearly dependent. सही बात है ना? करेक्ट है? हाँ जी, यस करेक्ट बेटा. तो यहाँ पर बी एंड सी हमारे जो ऑप्शंस है वो करेक्ट हो जाएंगे. Bronskin is identically 0 and u1 u2 are linearly dependent. तो चलो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया. फिर तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. आगे चलते हैं. सो y from r to r be the solution of this ODE. Okay, there must be, I think, some correction. There must be equality, I guess. Y at 0 and y dash at 0 both are equal to 0. Simple सा क्वेश्चन है. I think we have and yes, this is going to be MSQ. ये पक्का हमारा MSQ होगा, है ना? इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. तो हमारे पास इक्वेशन है d स्क्वायर माइनस का 1 y इक्वल टू e रेज़ टू -5. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या जाएगी यहाँ से? My auxiliary equation will be m square minus 1 is equal to 0, that is m equal to plus minus का 1. तो solution y of x क्या जाएगा हमारा? c1 e raised to x plus c2 e raised to minus x. Correct है? अच्छा okay. As non-homogeneous equation we are having, so this is going to be the complementary function. Now the particular integral क्या जाएगा? 1 upon b square minus 1 e raised to minus x. ठीक है? तो ये क्या जाएगा? -1 पुट करने पर लुक हियर 1 अपॉन d -1 and d +1 e raised to -x. It is non-vanishing, so minus of 1 by 2. It is vanishing, so x by 1 factorial e raised to -x. So I'll have minus of x e raised to -x by 2. Correct है जी भाई?
तो ये हमारा आ गया पी आई। तो सोल्यूशन वाई ऑफ एक्स क्या जाएगा यहाँ से, सिंपली c1 e रेज टू एक्स प्लस c2 e रेज टू माइनस का x एंड माइनस ऑफ x बाई टू e रेज टू माइनस का x। ओके, सो गिवन थिंग इज y एट 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव अगर मैंने निकाला तो y डैश क्या जा रहा है हमारा, y डैश आ जा रहा है c1 e रेज टू x माइनस c2 e रेज टू माइनस x, और यहाँ से माइनस ऑफ 1 बाई टू e रेज टू माइनस x एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस x by 2 e raised to minus x. Correct now? Now put here x equal to 0. So when I am putting here x equal to 0, c1 minus c2 and minus of 1 by 2, ठीक है, equal to 0. चलिए, तो दो इक्वेशन आ जा रही है, that equal to 1 by 2 कर देते हैं। चलिए, दोनों को मैंने ऐड किया तो यहाँ से twice of c2 is equal to 1 by 2 आ जा रहा है, that is c2 is equal to 1 by 4. If c2 is 1 by 4, then c1 will be what? c2 is 1 by 4, then c1 is equal to 1 by 4. So 3 by 4 आ जा रहा है, तो नहीं, एक सेकेंड, something is missing here. क्या करेगा यार, c2 1 by 4, 3 by 4, c1 is 3 by 4. क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ से? सॉरी बच्चा यार, क्या है, सॉरी सॉरी ना, सॉरी, twice c1 is equal to 1 by 2, तो c1 is equal to 1 by 4. So if c1 is 1 by 4, then c2 going to be minus of 1 by 4. Yes, yes, c2 हमारा माइनस का 1 by 4 हो जाएगा। यस, ठीक है। अभी तो c1 is 1 by 4 एंड c2 is माइनस का 1 by 4। सॉल्यूशन y ऑफ x आ जाएगा हमारा 1 by 4 e raised to x माइनस का 1 by 4 e raised to माइनस का x, 1 by 4 e raised to x plus minus 1 by 4 e raised to minus x and minus of x by 2 e raised to minus x। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, फटाफट से हमें मिल चुका है सॉल्यूशन। अब देखो ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करो। ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, सी पहले लिमिट निकालो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, सो ई रेज टू माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। चलो, इसको ई रेज टू माइनस एक्स से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से तो 1 by 4 माइनस 2x एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, लुक ये 0 हो जाएगा, x into e raised to minus का twice x, this will tends to 0 as extending to infinity, by the Leibniz rule कर लेंगे हम। तो यस, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आ जा रहा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बट इफ यू मल्टीप्लाई बाय e raised to x, e raised to x, if I multiply e raised to x and take x tending to infinity, so first टर्म से ही infinity मिल जाएगा, so that's why D option is not correct। ठीक है, D ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, y is bounded, does my function is bounded? No, clearly not bounded, not bounded as x tending to infinity, limit x tending to infinity, y of x क्या देगा, because of this term, because of this term you will have infinity, so y of x is a continuous function, no doubt it is a continuous function on R,
but x tending to infinity पर it tending to infinity, so clearly this function is not bounded. ठीक है जी, चलो ये हो गया not bounded. Now y attain its minimum on r, minimum value on r. चलिए, तो उसके लिए बेटा क्या करना होगा, हमें डेरिवेटिव देखना पड़ेगा. तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पर, 1/4 e raised to x प्लस ऑफ 1/4 e raised to माइनस का x and minus का 1/2 e raised to minus x, minus minus will become plus x/2 e raised to minus x and equal to 0. तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 1/4 e raised to x माइनस का 1/4 e raised to minus x प्लस ऑफ x/2 e raised to minus x is equal to 0. तो यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है क्या हमें, y dash क्रिटिकल पॉइंट निकालने रहेंगे ना हमें. वी नीड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सो दैट हम लोग मिनिमा मैक्सिमा निकाल सके. so देखो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, e raised to x minus e raised to minus x upon 4 is equal to minus of x/2 e raised to minus x. थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट्स सिंप्लीफाई इट. e raised to x by 4 minus of 1/4 e raised to x plus of x upon twice e raised to x is equal to 0. Let's take the LCM as 4 e raised to x. So this will give me e raised to twice x minus it is 1 and plus it is just 2. ठीक है जी, 2 is equal to 0. As this never going to be 0. So the thing is e raised to twice x plus 1 is equal to 0. But this will never going to be minus. कहाँ गड़बड़ हो गई. ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रही है. बट द गिवन थिंग इज y डैश वैनिश एट 0. y डैश वैनिश हो रहा है 0 पर, ये दिया हुआ है. कहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है. पुट x इक्वल टू 0 इन y डैश. हाँ तो बेटा वही तो यहीं से तो नहीं आ रहा ना. y डैश में x को 0 पुट किया तो वो सेटिस्फाइड कहाँ हो रहा है, ये देखिए ना. यहाँ से तो हो रहा है 0 पुट किया तो 1/2 ये सेटिस्फाइड हो रहा है. फिर ये यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो रहा है, अगर एक सेकेंड है ना. अच्छा ओके, सॉरी. हाँ सॉरी. Yes, so e raised to twice x is equal to 1 minus का twice x. So clearly this is going to be satisfied whenever x is equal to 0. है ना, वो दिया हुआ भी था, don't worry. So the thing is only I am getting one critical point. Already वो दिया हुआ था y dash at 0 is 0, so one critical point already I have. But I am just trying कि मतलब और भी critical point आएंगे क्या, but नहीं. So there is only one critical point which is x equal to 0. So yes, no doubt if you take here second derivative, so this must going to be your point of minima. आप easily check कर सकते हो यहाँ पर. Take your second derivative, then your second derivative at 0 must be greater than 0. So that's why x is equal to 0 going to be a point of minima. You can easily check it. So यहाँ पर इसने बोला y attains its minimum on r. Yes, so it attains. किस point पर attend कर रहा है वो इसने specific नहीं किया. Yes, so y attains its minimum on r. So that's why my A option is also correct. ठीक है.
चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, consider the boundary value problem this, so ठीक है, ये करेक्ट है। so the thing is I can write this equation as u double dash x plus pi square and u is the function of x is equal to 0, ठीक है ना, ये सिंपल है। चलो ओके, so the thing is d square plus pi square u is equal to 0, इंस्टेड ऑफ y हमें u मिल रहा है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि हम चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सके, और वेल ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो भी हमारा एमएसक्यू रहने वाला है, एमएसक्यू रहेगा। चलिए ओके, तो बच्चे यहाँ से देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस सॉरी एम स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सो एम इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस अल्टा पाई। सो द थिंग इज माय सॉल्यूशन नॉट वाई, सॉल्यूशन रहेगा हमारा u इज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos of pi x plus c2 sin of pi x, करेक्ट है। कंडीशंस गिवन है हमारे पास, u एट 0 इक्वल टू 0, तो 0 पुट किया तो यहाँ से c1 इज इक्वल टू 0, c1 0 जा रहा है, तो अभी मेरा जो सॉल्यूशन है u वो हमारा आ जाएगा c2 sin of pi x, ठीक है। ओके, सो द गिवन नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, u एट 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो u एट 1, तो यहाँ से क्या जाएगा c2 sin pi इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा ओके, सो लुक बेटा, यहाँ से लुक एट इट हियर। अच्छा ओके, कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ c2 फ्रॉम हियर, आंसर करो फटाफट से। कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ फिक्स वैल्यू ऑफ c2 फ्रॉम हियर, yes any real number, because c2 sin pi is 0 equal to 0, so ये तो satisfied हो रही है, that means I am not getting any value of c2 from here, that means c2 can be any real number, sin pi is 0 ना, तो this equation is already satisfied, the c2 can be any real number, so yes my solution u is a function of x is c2 sin of pi x, where c2 can be any real number, that means with respect to these conditions, I am having here infinite number of solution of the given problem। चलिए ओके, अब ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है फटाफट से हमें। देखो अब बस कैलकुलेशन है, आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शंस में आइडेंटिफाई कर लो, 0 to 1 u क्यूब x 0 आ जा रहा है, u क्यूब क्या जाएगा, u क्यूब x इज नथिंग बट c2 क्यूब sin क्यूब पाई x, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 1 u क्यूब x dx, it is nothing but c2 क्यूब 0 to 1 sin क्यूब पाई x dx। तो बेटा ये वैल्यू 0 आएगी क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 है नहीं, क्या ये वैल्यू 0 आएगी क्या, आप इवेल्युएट कर सकते हो, यस ना, यू कैन इवेल्युएट इट, कैसे, 0 से 1 sin pi x and 1 minus cos square pi x dx, take cos of pi x is equal to t, तो यहाँ से sin of pi x and minus का pi dx is equal to dt, so take the substitution, sin pi x dx will be replaced by minus of 1 upon pi dt, and here you will have 1 minus t square, लिमिट क्या जाएगी, when x 0 then t is 1, ठीक है, when x 0 then t is 1, when x is 1 then t is minus का 1, करेक्ट है। सो 1 upon pi लिमिट फ्रॉम 0 to 1 2 टाइम 1 minus t square dt, then clearly it is not equal to 0, है ना, कंप्यूट करके देखोगे तो नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। इवन फंक्शन है तो लिमिट 0 to 1 करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव था तो लिमिट्स को रिवर्स कर दिया था, सही बात है, यस। सो माय ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हियर, क्लियर है। चलो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है u डैश स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, u डैश स्क्वायर एट 0। चलो ओके, तो u का डेरिवेटिव लो भाई यहाँ से, तो u डैश क्या जा रहा है, now for B and C ऑप्शंस के लिए कर रहे हैं, now we are doing for B and C, u डैश क्या जाएगा, ये हमारा जाएगा c2 पाई cos ऑफ पाई x, सही बात है, डेरिवेटिव क्या जाएगा c2 पाई cos ऑफ पाई x,
चलिए ओके, तो मुझे निकालना है u डैश एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना है प्लस पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स, यही निकालना है ना, एक बार दोबारा देख लें। u फर्स्ट डेरिवेटिव स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर एंड यू स्क्वायर इक्वल टू इसके आ रहा है क्या? चलो तो मुझे यही निकालना है। चलो तो देखो बेटा, इसका स्क्वायर किया तो क्या जाएगा, c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई एक्स, सही बात है। एंड यहां से ये आ जा रहा है हमारा पाई स्क्वायर, और यू स्क्वायर क्या जाएगा, यू स्क्वायर इज c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स। यू क्या है हमारा, यू तो यही है ना, c2 साइन पाई एक्स, तो इसको स्क्वायर किया तो c2 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब यहाँ से देखो c2 स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर पाई पाई एक्स साइन स्क्वायर पाई एक्स बना गया, तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू जाएगी, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी u डैश एक्स टू द होल स्क्वायर, यस और नो, यस और नो बेटा, u डैश ये आ रहा है, हाँ, इसकी वैल्यू 0 पर, यस और नो। इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 पे निकालोगे तो 0 पर वैल्यू क्या जाएगी, c2 पाई, इसका स्क्वायर किया तो c स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो वही यहाँ पर पूछा गया, देखो u डैश स्क्वायर एट 0, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी यहाँ पर सेम एक्सप्रेशन है बट u डैश स्क्वायर एट 1, तो आप यहाँ से देखो बेटा, इधर में अगर आपने 1 पुट किया तो कोस पाई आ जाएगा, कोस पाई इज -1, तो माइनस ऑफ c2 पाई आ जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो c स्क्वायर पाई स्क्वायर, यही आएगा विच इज इक्वल टू u डैश एट 1 टू द होल स्क्वायर, करेक्ट है। सो द थिंग इज हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। आ रही है बात समझ में, आई बात समझ में। अब बेटा आप इसको भी निकाल लोगे, हमने क्यूब के लिए किया था, इसको निकाल लोगे आप, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, इसमें कुछ है भी नहीं। यू स्क्वायर करोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, और यू डैश स्क्वायर करोगे और उसको इंटीग्रेट करोगे, 1/पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप देख लेना दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिंपल है ना। सो द थिंग इज सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी आ सकती है जहां पर आपको सोल्यूशन निकालना होगा, और फिर वो जो सोल्यूशन है किन किन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकता है वो आपके पास ऑप्शन में रहना रहेगा, तो आप बस ऑप्शन बाय ऑप्शन करते जाना है प्रॉब्लम्स को। आगे समझ में, हाँ जी, कर लोगे आगे वाले ऑप्शन को खुद से, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो ओके, तो इसको अपने आप कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये है, y1 y2 form a complete set of solution of the differential equation this, okay, हमारे पास ये दिया, then the Wronskian, okay, then the Wronskian w of y1 y2 at x equal to 1. See, this question is quite easy and we have done such problem in the class also, है ना, by the Abel's formula, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो एबल्स फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका Wronskian निकाल सकते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, मुझे क्विकली आंसर मी फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, वी हैव डिस्कस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास, कुछ डिफरेंट नहीं है प्रतीक्षा, वेरी गुड प्रतीक्षा, यस। आंसर आएगा हमारा बी, दैट इज माइनस का ई। मिल रहा है किसी और को भी? एबल्स फॉर्मूला से Wronskian क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टाइम e रेज टू इंटीग्रल माइनस y डैश कोएफिशिएंट ना, which is माइनस का 2x अपॉन y डबल डैश कोएफिशिएंट which is 1 dx। प्रतीक्षा और मनोज के अलावा किसी को भी आंसर नहीं मिला? फ्रेंच, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो c e रेज टू, यहाँ से क्या जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर, तो Wronskian ये मिल जा रहा है हमें। रुचिका वेरी गुड बेटा, बी आंसर आ रहा है, यस ये हो गया। अब देखो ये कंडीशन आपके पास है ना, तो यहाँ से y एट 0 इज 0, y1 एंड y2 एट 0 इज 1। देखो Wronskian को 0 पे निकाल लो तो क्या जाएगा, y1 एट 0 इज 0, y2 एट 0 इज 1, y1 डैश एट 0 इज 1, y2 डैश एट 0 इज 1। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, माइनस का 1, तो w एट 0 इज इक्वल टू माइनस का 1 मिल जा रहा है, तो इस कंडीशन का यहाँ पे यूज लिया तो -1 इज इक्वल टू c।
सो द थिंग इज ब्रॉन्ज के क्या आ जा रहा है, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो अच्छा पॉजिटिव है, तो क्या आ गया माइनस का ई। यस, मिल गया सभी को आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा आ गया। चलो इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, y1 y2 be the solution of this equation. See we are having here 5 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके दो ही एक ही सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन है। अब इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो एक सॉल्यूशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, अनदर सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है जी, ओके। और हमें देखना है कि ये इंटरसेक्शन वगैरह पूछा गया कि किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या क्या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो जनरल सॉल्यूशन, तो हम इसको कर देते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा देते हैं यहाँ पर, y प्लस 17 इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से जाएगा log ऑफ y प्लस 17 इज इक्वल टू x से प्लस वो बैलेंस ही कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या जाएगा y प्लस 17 अपॉन x इज इक्वल ln ऑफ y plus 17 upon c is equal to x. So the thing is y plus 17 is equal to c e raised to x. ठीक है जी, ये आ जा रहा अपना। So y plus 17 is equal to c raised to x. Okay, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास गिवन है जिसके थ्रू y1 मिलेगा, y1 at 0 is equal to 0 है ना। द वैल्यू ऑफ y is 0 when x is equal to 0, तो यहाँ से बेटा c का वैल्यू क्या मिल गया, c का वैल्यू मुझे मिल जा रहा है 17। सही बात है, c का वैल्यू मुझे मिल गया 17। तो देखो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है y1, तो y1 x क्या हो जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू c1 मिल गया 17, तो ये e रेज टू x हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है y1 x इज इक्वल टू 17 कॉमन ले लिया तो e रेज टू x माइनस का 1 आ गया समझ में। ठीक है, तो y1 at 0 इक्वल टू 0, तो उसके रेस्पेक्ट में तो मुझे सॉल्यूशन ये मिल रहा है। ओके ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है y2 at 0 इक्वल टू 1, नेक्स्ट आ रहा है y2 at 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये वैल्यू 1 है प्लस 17, तो द थिंग इज 18 इज इक्वल टू c, तो c का वैल्यू मिल गया ये। तो यहाँ से y2x प्लस 17 इज इक्वल टू 18 e रेज टू x, ये मिल जाएगा। सही बात है, y2 प्लस 17 18 इक्वल 18 e रेज टू x, तो y2x जो ये आ जा रहा है वो आ रहा है 18 e रेज टू x माइनस का 17। तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल रहा है और दूसरा सॉल्यूशन हमें ये मिल रहा है, मतलब ये दो सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा गया है कि किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और किन पॉइंट पर नहीं कर रहे हैं। सो द थिंग इज हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यही बात हुई ना। तो बेटा ये एक कर्व है, मान लिया ये एक कर्व है y इक्वल टू दिस, और एक ये दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू दिस, तो दोनों पॉइंट्स दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सो नाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ of intersection we will equate both the curves, यही करेंगे ना। तो दोनों कर्व को इक्वेट कर देते हैं, तो 18 e रेज टू x माइनस का 17 इज इक्वल टू क्या जाएगा 17 e रेज टू x माइनस का 1। दोनों कर्व्स को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालना चाहेंगे है ना। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या मिल जा रहा है 18 e रेज टू x माइनस 17 इज इक्वल टू 17 e रेज टू x माइनस का 17, माइनस 17 को माइनस 17 कैंसिल आउट, e रेज टू x इज इक्वल टू 0। सो डू वी हैव सम x हियर, e raised to x is equal to 0 for what value of x? Do we have a real number x जिसके लिए e raised to x 0 हो जाएगा? आंसर दो मुझे। नो है ना, सो नो सच x exists, yes correct। तो ये इंप्लाई कर दे रहा है नो सच x exist, that means we have no point of intersection as we are getting no value of x, that means we will not get corresponding values of y, correct ना।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मीन्स माय कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, माय कर्व्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन जो भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, जो कर्व्स मिल रहे हैं, कर्व्स आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो हमारा आंसर हो जाएगा y1 y2 will never intersect, yes, so A option would be correct। चलिए ओके आगे बढ़े। Okay, next problem is this. Next problem is this. Okay. चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है consider the differential equation u double dash t plus p is the function of t u dash q u equal to r is the function of t, that means we are having here second order linear differential equation, ठीक है, t can be any number between 0 to 1, ठीक है। There exists continuous function p q r defined on this and two solutions u1 u2 of this ODE such that the Wronskian of u1 u2 is equal to what? चलो, anyone can you give me some idea? Anyone? See, I have a equation, second order linear differential equation, ठीक है, for which u1 and u2 are two solutions, ये हमें given है, and the question asking for the Wronskian, ठीक है। So we have the standard result that Wronskian is either identically zero or never be zero in the domain. Yes, either Wronskian is identically zero or never be zero in the entire domain. We have choices for the Wronskian A B C D, है ना, चार choices है हमारे पास Wronskian की, and we have the domain also. We have the domain also. Can you give me the correct answer? What would be the choice here for the Wronskian? Wronskian के लिए क्या choice होगी यहाँ पर? See, look. If you are choosing this, because this question is random. Here P Q R can any function of x. They may be constant, they can be anything. ठीक है, so standard पूछा गया, हमारे पास standard result है that Wronskian is either identically zero or never be zero. And also यहाँ पर ये भी information नहीं है that U1 and U2 are Li or LD. We have no information that. ठीक है, so we will use only our result, our standard that Wronskian is either identically zero or never be zero in the given domain. So we have formulas for the Wronskian and we have the domain also. We have the domain also. So we have to pick the correct one. And this question is also MCQ type. So only one option going to be correct. Very nice, Pratiksha. Yes. So look, beta. If you are choosing this Wronskian, so at x is equal to 1 by 2, here your Wronskian becomes 0. So this cannot be possible because Wronskian never going to be 0 at a particular point. Either it is identically 0 or never be 0. If you are choosing the B option, C, you can take t equal to pi by 2, same here. You can take t equal to 1 by 2. You can take t equal to 1 by 2 because if you are putting here t equal to 1 by 2, then 2 pi by, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, जस्ट ए सेकेंड ना, that's okay. That is sin pi and the sin pi is equal to 0, so it is also not possible, है ना। यहाँ पर you can put here t equal to, c के लिए t equal to 1 by 4 put कर सकते हो, because if you are putting here 1 by 4, तो cos of 2 pi by 4, that is cos of pi by 2 and it will become 0, ठीक है। So the D option is correct. Wronskian going to be 1, which is never going to be 0, which is not 0 on the entire domain, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है, Wronskian is either identically 0 or never be 0 on the domain. आ गया समझ में? So D option would be correct. So it's just a result based question, और कुछ नहीं। आगे बढ़े। Now it's done. ठीक है बच्चा लोगों। So in today's class we have discussed some important questions on differential equations, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर तो वाइंड अप करते हैं। और अभी आप लोगों का एग्जाम है, यू हैव एग्जाम ऑन दिस संडे, दैट इज परसों आपका एग्जाम है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना, एकदम शांत रहना, शांत दिमाग से पेपर को अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। पहले एमसीक्यू 1 मार्क, एनईटी 1 मार्क, उसके बाद एमसीक्यूज, एंड द थिंग इज ट्राई करना एमएसक्यू सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। ट्राई टू अटेम्प्ट योर एमएसक्यू एट द एंड ऑफ, मतलब ट्राई करना, नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, एमएसक्यूज को लास्ट में अटेंड करने की कोशिश करना, पहले एमसीक्यूज और एनईटीज ले लेना। ठीक है, so shall we wind up our today's class?